Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we will be discussing the concept of pipelining from Unit 2, Computer Organization and Architecture. तो आज वाले सेशन में हम लोग पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली हमारा री एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें भी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था, दैट टू विदाउट स्टॉल्स। तो हम बेसिक पाइपलाइनिंग डिस्कस करेंगे, एडवांस पाइपलाइनिंग की बात हम बाद में करेंगे, बट आज वाले सेशन में विल बी जस्ट focusing on what is pipelining, what is the performance of pipelining और pipelining काम किस तरीके से करते हैं. Will not be going into the depth, but I'll provide the complete introduction along with the performance of pipelining. So this will be the agenda for today's session. So let's understand that what is pipeline. पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब होता है कि बिफोर गेटिंग द आउटपुट, इससे जो आपने ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ है उसकी आउटपुट मिलने से पहले कुछ और इनपुट सिस्टम में एंटर हो रही है, दैट मींस कुछ ऑपरेशंस ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि एक क्लॉक साइकिल में मल्टीपल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, दैट इज नोन एज पाइपलाइनिंग rather than just executing the instructions one after the another. We are utilizing the pipeline because it improves the efficiency. क्योंकि जब parallelism आएगा, जब overlapping होगी operations की, तो definitely performance improve होगी, because total time जो execution time that will be less. So pipelining means accepting the new inputs into the processing. किससे पहले आप नए इनपुट्स एक्सेप्ट कर रहे हो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ओल्ड इनपुट. इसका मतलब ये है कि जो नई इनपुट है दैट विल बी ओवरलैपिंग विद द ओल्ड input. So pipelining allows the overlapping of the execution. For example, if I represent this, अगर मैं यहाँ पे pipeline और non pipeline का concept लूँ, so मैं यहाँ पे कुछ stages, let's say I'm considering 3 stages. This is stage 1. जो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, कौन से इंस्ट्रक्शन कौन सी स्टेज में एग्जीक्यूट हो रही थी पाइपलाइन की, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द स्पेस टाइम डायग्राम. तो यहाँ पे मैं स्पेस टाइम डायग्राम बना रही हूँ, जहाँ पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एग्जीक्यूशन. जब आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, देन देयर आर वेरियस स्टेजेस. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव 3 स्टेजेस. क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे 3 स्टेजेस ले रही हूँ. So we have 3 stages, and we have the clock cycles. जो x-axis है that represents the clock cycles. This is clock cycle 1, then we have clock cycle 2, clock cycle 3, clock cycle 4, and so on. In case of non-pipeline and pipeline, the difference is non-pipeline के case में overlapping नहीं होती. If we take the clock cycles हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is representing the clock cycles, and let's say there are 3 stages. Although RISC processor में हमारे पास 5 stages होती हैं, we'll talk about that later. As of now, just assume that there are 3 stages. तो जैसे ही आपके पास first instruction आएगी, first of all, let's talk about the non-pipeline. इंस्ट्रक्शन 1 जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, इंस्ट्रक्शन 2 वॉन्ट एंटर द सिस्टम. सो इंस्ट्रक्शन 1 स्टेज 1 में आई, नेक्स्ट क्लॉक में ये स्टेज 2 पे चली गई, देन नेक्स्ट स्टेज पे इट इज गोइंग टू स्टेज 3. वंस ऑल द स्टेजेस आर ओवर, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द आउटपुट हियर. आफ्टर द थर्ड क्लॉक यू विल गेट द आउटपुट फॉर इंस्ट्रक्शन 1. जब थर्ड क्लॉक के बाद आपको I1 की आउटपुट मिल गई, देन फोर्थ क्लॉक में I2 विल एंटर इनटू द सिस्टम. I2. So in the sixth clock, I2 will complete its execution. This is the concept of non-pipeline. Non-pipeline means accepting the new inputs. नई input कब आ रही है? Only after the completion of the old input. पुरानी input जब खत्म होगी, उसके बाद ही आपके पास नई input आएगी. तो basically हम इसको sequential execution भी बोलते हैं कि एक instruction execute होगी, then the other will enter into the system. That is sequential execution. If we talk about the pipeline में हमने बोला कि before getting the output for the
इनपुट आपके पास कुछ नई इनपुट सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है. हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग द स्पेस टाइम डायग्राम. सो वी हैव 3 stages, 1, 2, 3. There are 3 stages and we have the clocks. All right, इसके आगे नहीं बना रही हूं मैं. So this is stage 1, this is stage 2, this is stage 3, and here we have the clocks, clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, 5 and so on. अब पाइपलाइन के केस में क्या होगा, आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सिस्टम में एंटर हुई, दिस इज एट स्टेज 1. नेक्स्ट क्लॉक पे इट इज गोइंग टू 2. तो जब स्टेज 2 पे गई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन 1 इज एट स्टेज 2, तो स्टेज 1 क्या कर रही है उस टाइम पे, दिस इज एम्प्टी. So in order to utilize this, the new instruction will be introduced here. Now notice here, before getting the output for instruction I1 के output आने से पहले instruction I2 भी system में enter होगी. Now in the next clock, this is going to the next stage. Instruction I2 कहाँ पे आएगी? Instruction I2 will be going to stage 2. जब instruction I2 stage 2 पे गई, उस टाइम पे stage 3 खाली थी, so a new input can be introduced. So this is what we are saying, that before the completion of the I1 के कंप्लीट होने से पहले ऑलरेडी आपके पास I2 और I3 भी सिस्टम में आ चुके. इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑपरेशन. आप देख सकते हो क्लॉक साइकिल 2 इज शेयर्ड बाय 2 इंस्ट्रक्शंस I1 एंड I2. Similarly, clock 3 is shared by 3 instructions I1, I2 and I3. जो सक्सेसफुल पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज अचीव्ड फॉर आइडियल पाइपलाइन, जब हर एक नई क्लॉक में आपको नई इनपुट मिल रही है. सो द सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक पाइपलाइन प्रोसेसर, फॉर एवरी न्यू साइकिल द इनपुट मस्ट बी देयर. हर नई साइकिल में आपके पास एक नई इनपुट आ रही है. This means for ideal pipeline, CPI is almost 1. CPI is clocks per instruction, that is almost 1. That means हर एक नई clock में आपको नई input मिल रही है. So I2 will be completing its execution here. This is I3 and I3. So now you can see that for the first instruction, it's taking the 3 clocks to return the output, but I2 and I3 के लिए this is just taking 1 clock. So the overlapping execution sequence is represented by the space-time diagram. ये जो मैंने diagram बनाया है, this is known as space-time diagram. Okay, and y-axis is representing the stages. Stages कितनी होंगी? It depends on the processor. And x-axis is representing the clock cycles, to count that how many clock cycles are required for the execution of all the instructions given to you. Now, a question arises is, why do we require the concept of pipeline? जब already हमारे पास sequential execution exist करता है, तो pipeline क्यों कर रहे हैं? Pipelining की requirement क्यों पड़ी? अभी हमने देखा कि पाइपलाइनिंग के केस में हमारे पास ऑपरेशंस ओवरलैप हो रहे हैं. वन क्लॉक साइकिल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल डेटा. तो इसका मतलब जब पैरेलली कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो डेफिनेटली द टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस, क्योंकि सेम टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड. सो दिस improves the efficiency, this improves the performance of the system and making the system faster. So in order to improve the performance of a CPU, we have two options. It improves the hardware by introducing faster circuits, and it arranges the hardware such that more than one operation can be performed at the same time. अभी हमने देखा कि जब overlapping होती है, तो obviously it is performing multiple operations at the same time. क्योंकि हार्डवेयर की स्पीड पे लिमिट होती है एंड द कॉस्ट ऑफ द फास्टर सर्किट्स इज क्वाइट हाई. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड ऑप्शन. So in this case, in the second option, we are performing more than one operation at the same time. So in simple terms, we can say that pipelining is nothing but ये कुछ ऐसा arrangement है hardware elements का जो CPU के अंदर होता है, so that आपके पास overall performance will be increased
and simultaneous execution of more than one instruction takes place in a pipeline processor. तो same time पे आपके पास multiple instructions execute हो रही है. So we can say that pipelining allows the temporal parallelism. So this is the introduction to pipeline. Now if we talk about the designing, तो अभी मैंने आपको एक डिजाइन बना के बताया, तो उस केस में हमने देखा कि पाइपलाइन प्रोसेसर के अंदर हमारे पास दो एंड्स होते हैं, वन इज द इनपुट एंड अदर वन इज द आउटपुट एंड. इनपुट एंड जहां से आपके पास इनपुट इंस्ट्रक्शन एंटर हो रही है, आउटपुट एंड जहां पे आपको आउटपुट मिल रहा है. सो S1 वाली साइड से न्यू इनपुट वाज इंट्रोड्यूस्ड, सो दैट वाज बिहेविंग एज द इनपुट एंड, और आउटपुट एंड स्टेज 3 के बाद जहां पे हमें आउटपुट मिल रही है, दैट इज द आउटपुट एंड. So it has two ends, input end and output end. Between these two ends, दोनों ends के बीच में, like stage 1 and stage 3 के बीच में, और if we have 5 stages, stage 1 और stage 5 के बीच में, there will be multiple stages or the segments, ताकि एक stage की output दूसरी stage की input की तरह काम करे. So there are multiple stages or the segments such that the output of one stage is connected to the input of next stage, and each stage, हर एक stage परफॉर्म करती है कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन. अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू fetch the instruction fetch, instruction decode, execute, write back. So these are the general ones. So these each operation is represented or is handled by each stage. Now, interface registers are used to hold the intermediate output. बीच में आपके पास दो stages के बीच में there can be some segments, there can be some buffers added so that it can hold the output of one stage temporarily before the next one accepts it. So it holds the intermediate output between the two stages. Stage को आप pipes और segment भी बोल सकते हो. These interface registers are also known as latch or buffer pipeline register or interface register. जितनी भी आपके पास stages हैं pipeline के अंदर, along with the interface registers or you can say buffer, these are controlled by a common clock. यानी कि जितनी भी stages हैं, जितनी भी latches और buffer use हो रहे, all are controlled by a single latch. On the next slide, I'll draw the diagram. So to process any instruction or input, that must be moving through all the stages in the pipeline. तो input stage से enter होगा and output stage से आपको output मिलेगी. इतना clear है? So this is the introduction. Now we'll be going into more details, and after observing the pattern, we will be analyzing the performance of the pipeline system. Yes? Okay. Now we have said that for the designing of the pipeline, हमारे पास different stages हैं. So I'm taking here different stages. This is stage 1. We have stage 2. This is stage 2. We have stage 3. How many stages will be there? It depends on the processor. So stage 3 and so on up to stage K. मैं यहाँ पे K stages ले रही हूँ. There is no fixed count to this. This is stage K. Stage 1, stage 2, stage 3 and so on up to stage K. After the Kth stage, you will get the output for the provided input. Stage 1 side से आपके पास input आ रही है, and we have said that after every stage there is a buffer or a latch which is going to hold the intermediate result. So let me take here the buffer or the latch. Oh. So this is buffer.
After every stage, there is a buffer in order to hold the intermediate result. अब buffer बोल लो, latch बोल लो, one and the same thing. After every stage, but definitely after the kth stage there is no latch because intermediate result नहीं आएगा, आपके पास final output आ जाएगी, so it will return the final output. तो जो भी आपके पास stage 1 से output आ रही है, that will be stored inside the latch. This is your latch, and then it will be forwarded to stage 2. Stage 2 की जो भी output होगी, it will be stored in the intermediate latch. Then the output will be forwarded to stage 3. Then again we are having here a latch. Now we have said that all the stages are controlled by the same clock. So there is a clock. There is a clock. All the stages and all the buffers or latch are controlled by the same clock. Here we have clock. So common clock is used in the pipeline so that all the stages must complete the operation within the same cycle. बिना किसी delay के सारी की सारी stages same clock में operation perform करेंगे. Correct? And apart from that, we have said that we have the space-time diagram. Let us assume that we have 4-stage pipeline. मैं यहाँ पे assume कर रही हूँ कि हमारे पास 4-stage pipeline दिया हुआ है. We have 4-stage pipeline. 4-stage pipeline, and we have 4 tasks available. तो execution किस तरीके से हम represent करेंगे? We know that x-axis represents the clock cycle. So this is clock cycle 1, clock cycle 2, clock cycle 3, clock cycle 4, clock cycle 5, clock cycle 6, 7, or I guess it's going beyond the image. Image के पीछे आ रहा है तो इसको हम हटा देते हैं. Although it won't be inside the space-time diagram, but क्योंकि last row के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, that's why I'm writing here. So this is clock cycle 4, clock cycle 5, clock cycle 6, clock cycle 7, clock cycle 8, clock cycle 9, clock cycle 10, and so on. So this is representing clock cycles, and here we have the stages. Now we are given that we have 4 stages. So this is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. 4 tasks are given to you. तो पहला task आएगा, every task will start its execution from stage 1. तो आपके पास instruction 1 आए. Then in the next clock, this will go to stage 2. In the next instruction, this will go to stage 3 and stage 4. जब instruction stage 2 पे गई तो stage 1 was empty, so I2 is introduced here. I2, I2. In every clock, this is the scenario of the idle pipeline. So in every clock, this is going to the next stage. If you observe here, for the first input we got the output after 4 clock cycles. Reason is हर एक stage के लिए 1 clock cycle is required. If we have 4 stages, that means 4 clock cycles are required to return the first output. Then next clock में you are getting the next output for I3, 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 and I3. Now after that, for every clock, we are getting the output. सिर्फ पहली आउटपुट थी जिसके लिए आपके पास 4 क्लॉक साइकिल्स लगी पहली आउटपुट जनरेट करने के लिए, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन इज मूविंग वन बाय वन थ्रू ऑल द स्टेजेस. सो आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर एवरी स्टेज. अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कैलकुलेट करनी हो फॉर द आइडल पाइपलाइन, so in that case we can say that if we have n instructions, let me write that on the next slide.
If we have n instructions, then uh, for the first instruction, आपको कितनी clock cycles चाहिए? Let's say we have k segments in the pipeline. K segments means k stages. तो पहली instruction के लिए you will be getting the output after k cycles. एंड बाकी की जितनी इनपुट्स बची, अगर आपके पास n टास्क हैं, n इनपुट्स हैं, देन रिमेनिंग विल बी 8 निकल गया, सो रिमेनिंग विल बी n minus 1 instruction, and for n minus 1 instruction at every clock we are getting the output. This means that n minus 1 instructions की output return करने के लिए it requires n minus 1 cycles. टोटल आपके पास n टास्क थे, n इंस्ट्रक्शंस थी, तो हाउ मच टोटल क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड? इट इज 1 प्लस sorry, for the first instruction it's taking k plus पहले इंस्ट्रक्शन के लिए k क्लॉक साइकिल्स चाहिए, एंड फॉर रिमेनिंग n minus 1 instructions n minus 1 clock cycles are required. So it is k plus n minus 1 clock cycles. और अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा एक क्लॉक साइकिल में, दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, सो विल मल्टीप्लाई इट विद द टाइम. ये जो मैंने लिखा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लॉक साइकिल्स. So if we have a k segment pipeline, यानी कि k stages हैं pipeline के अंदर, with the clock cycle time, एक clock के लिए कितना टाइम दिया है? TP. यहाँ पे P मैंने इसलिए लिए, सबस्क्रिप्ट P इसलिए यूज कर रही हूँ कि ये पाइपलाइन का टाइम है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड अप, देन वी हैव टू कंपेयर कि पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है. देयर आर n टास्क, आपके पास n इनपुट्स है, n टास्क हैं जिनको आपको पाइपलाइन प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करना है. सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी टेकिंग द k क्लॉक साइकिल्स. ये हमने देखा. अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल वी हैड 4 स्टेजेस, तो पहली आउटपुट कितनी स्टेजेस के बाद मिली हमें? 4 के बाद. सो दैट मीन्स अगर आपके पास 5 स्टेजेस होते, 5 क्लॉक साइकिल्स, सो इफ वी हैव k segment और k stages, that's going to take k cycles to come out of the pipeline. बट जो बाकी की n minus 1 इनपुट्स हैं, यहाँ पे टोटल इनपुट्स आपके पास n टास्क हैं, तो 1 is left out, एक को बाहर निकाल दिया, बची n minus 1, और हर एक के लिए हमें एक साइकिल चाहिए in order to get the output. I am relating it with the एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया. तो इसका मतलब अगर n minus 1 instructions थी, तो रिमेनिंग n minus 1 instructions के लिए we need n minus 1 cycles. So we can say that the total time taken is k plus n minus 1 cycles, and since one cycle is taking TP time, so it comes out to be k plus n minus 1 into TP. This is the execution time in the pipeline processor. बट अगर हम नॉन पाइपलाइन की बात करते हैं, तो हमने ये बोला है कि नॉन पाइपलाइन के केस में एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होगी, ओनली देन यू विल गेट द नेक्स्ट इनपुट. So one instruction will be going through all the stages. So if we have k segment, that means for one instruction k cycles are required. Second instruction के लिए again k cycles are required. Third instruction के लिए again k cycles are required. How many instructions we have? We have n instructions. So this will be repeated for n times. So ultimately this comes out to be, अगर मैं k common ले लूँ, it comes out to be k into n. So for non-pipeline processor, each input requires tn time. अगर आपके पास एक input के लिए tn time चाहिए, तो n instructions के लिए कितना time चाहिए? It is n into tn. Make sense? This is about the pipeline and the non-pipeline. Question किस type से आता है? आपसे पूछा जाता है what is the speed up, और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर कोई आपको सिनेरियो गिवन होगा, अगर आप पाइपलाइन प्रोसेसर यूज करते हो, हाउ मेनी क्लॉक साइकिल, हाउ मेनी लेस क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, और अगर आप नॉन पाइपलाइन यूज करते हो तो कितनी ज्यादा क्लॉक साइकिल्स लगेंगी एज कंपेयर टू द पाइपलाइन. तो डायरेक्टली पाइपलाइन के बेसिस पे साइकिल्स या टाइम पूछा जा सकता है, or they may ask you to compare the execution time of in both the scenarios with pipeline and without pipeline. So you should know both the formulas. These are the basic ones.
Anyone having any doubt? ये समझ में आया? यहाँ तक ठीक है? If this is fine, then we are going to talk about the performance, like we'll talk about the speed up. एक बार confirmation दे दीजिए if till this point it's clear for everyone. Now let's talk about the speed up. Speed up of the pipeline processor is nothing but that is the performance of pipeline processor over the performance of the non-pipeline processor. हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि हमारे पास n tasks हैं. So if I'm talking about the speed up factor, speed up factor, speed up को मैं represent कर रही हूँ s के साथ. कितना स्पीड अप हुआ, किसका कंपैरिजन करना है, पाइपलाइन वर्सेस नॉन पाइपलाइन. सो वी विल से दैट it's nothing but the performance of pipeline, performance of pipeline system divided by किसके साथ कंपेयर करें, नॉन पाइपलाइन. सो परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन, performance of non pipeline. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, इसको रिलेट करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के साथ. कोई भी सिस्टम है, अगर सिस्टम इज टेकिंग मोर टाइम तो परफॉर्मेंस क्या होगी. Basically what I'm trying to do is I'm trying to find the relation between the execution time and the performance. If for any system, any processor, the execution time is more, so its performance will be less, right? किसी भी स्पीड, किसी भी प्रोसेसर के लिए अगर स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली इफ स्पीड इज मोर, परफॉर्मेंस इज मोर, तो इसका मतलब कम टाइम में आपको आउटपुट मिल रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो परफॉर्मेंस कम हो रही है, टाइम कम लग रहा है तो परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम. This means that we can write this as 1 upon execution time in the pipeline processor divided by performance of non-pipeline means 1 upon execution time in the non-pipeline processor. This means that we can write here, this is nothing but execution time is equal to speed up factor is equal to execution time of non-pipeline processor divided by execution time of pipeline processor divided by execution time of pipeline processor. तो अगर आपसे स्पीड अप पूछते हैं, you need to use this formula, and we know that what is the execution time of non-pipeline processor and pipeline. Non-pipeline के केस में हमने बोला कि अगर आपके पास n tasks हैं and it's taking tn time for time taken by the non-pipeline system divided by pipeline के केस में execution time कितना है, it is k plus n minus 1 into tp. Now, if we increase the number of tasks, अगर मान लीजिए number of tasks आपके पास 1 lakh है and the number of stages are 4, so k minus 1 is kind of negligible. So if n, that is number of tasks, is much greater than number of tasks is much greater than
the number of stages. So we can say that k plus n minus 1 is approximately close to, let me write this on the next slide. Okay, so if k minus 1 is much smaller than the number of tasks, if stages are less or the number of tasks are increased, then we can say that speed up factor जो अभी आपके पास आ रहा था n into t of n divided by k plus n minus 1 upon tp. So we can say that k plus k minus 1 is approximately negligible. So if it is negligible, then we'll be getting k plus n minus 1 almost equal to n, क्योंकि k minus 1 negligible हो गया. So this is n upon tp. So n के साथ n cancel हो सकते हैं. So we can say that speed up is equal to, or let me write here. So speed up is equal to Tn upon Tp. Can we say that? Definitely yes. हमने एक बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट किया and on the basis of that we are finding the speed up. Now after this we have to talk about the efficiency. So we have got the maximum speed up, and if we talk about the maximum speed up, so total time t of n कितना लगेगा? T of n नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में कितना टाइम लगेगा? अगर एक स्टेज एक इंस्ट्रक्शन के लिए टीपी टाइम लग रहा है एंड वी हैव के टास्क, सो दिस इज गोइंग टू टेक टीपी. So if I substitute this value here, so maximum speed up, S max is representing maximum speed up, maximum speed up comes out to be S max is equal to Tn is K into Tp divided by Tp. So this means that S max comes out to be Tp. I'm writing here maximum speed up is nothing but it's equal to Tp, it's equal to the number of stages. Maximum speed up, this is equal to number of segments or the number of stages in the pipeline system. Is this clear? तो हम ये बोल सकते हैं maximum speed up is nothing but that is the pipeline depth. Till this point, is it clear? If it is clear, then we just have to talk about the efficiency and the throughput. So efficiency is nothing but that is the speed up over the maximum speed up. तो basically efficiency में हम क्या बोल रहे हैं कि कितना आपके पास स्पीड अप है और मैक्सिमम कितना स्पीड अप आ सकता था. किसी भी चीज की जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट दैट हाउ मच we have achieved and actually totally kitna aa sakta tha, and we also know that S max is nothing but K. Right now we have proved this, so we can say that efficiency is nothing but that is speed up divided by the pipeline depth. And throughput is nothing but that's the number of instructions divided by total time to complete the instruction. So number of instructions हमने ये माना है कि we have n tasks, we have n instructions, so throughput comes out to be n divided by total time कितना लग रहा है complete करने के लिए, it is k plus n minus 1 into tp in the pipeline processor. So ultimately the throughput comes out to be n divided by total number of instructions are n divided by k plus n minus 1 into t. ये जो भी हमने फॉर्मूलाज एफिशिएंसी थ्रूपुट की बात की है, इसके बेसिस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं. आपने देखा है इस बार भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे. सो यू शुड नो दैट हाउ द एफिशिएंसी और द थ्रूपुट इज कैलकुलेटेड फॉर द पाइपलाइन प्रोसेसर. अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस वेरी करती हैं, दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन itself.
बट इफ वी टॉक अबाउट द रिस्क प्रोसेसर, तो रिस्क प्रोसेसर में हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं. रिस्क प्रोसेसर हैज 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट. जो फर्स्ट स्टेज होती है, जब भी आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो फर्स्ट स्टेज में हमें क्या चाहिए, वी नीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे मेमोरी में से एंड विल कीप दैट इन द CPU register, that is the instruction register. So in this stage the CPU reads the instruction from the address, memory से read करेगा and it will keep that in the CPU register. कौन सी memory से read करेगा, based on the value of the program counter, because program counter always holds the address of the next instruction. जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई, अब इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमारे पास ऑपरेशन कोड होता है, एड्रेसेस होते हैं. ऑप कोड टेल्स यू द टाइप ऑफ ऑपरेशन. जब आपको टाइप ऑफ ऑपरेशन पता होगा, देन ओनली विल एनालाइज दैट हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशन. So second stage is the instruction decode. In this stage the instruction is decoded and the register file is accessed to get the values from the registers used in the instruction. जब आपने इंस्ट्रक्शन डिकोड कर ली, आपको समझ में आ गया क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आफ्टर दैट इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन. सो इन दिस स्टेज ALU operations are performed. Now once the operations are performed, so in order to complete that we need some operands, so again need to access the memory. In the stage memory operands are read or written to or from the memory that is present in the instruction, because in the instruction we have the address field as well depending on the instruction format. If it's zero address instruction format तो definitely there won't be any address, कोई भी address नहीं होगा. अगर one address है, नाम से समझ में आ रहा है, opcode field के साथ एक address field होगी. If it's two address instruction, along with the opcode there will be two address fields and so on. Once all the operations are performed, तो result को वापस से memory में store करवाना है. For that we have the write back. So in this stage the computed or the fetched value is written back to the register present in the instructions. So these are the various stages. तो RISC के अंदर आपके पास 5 stage instruction pipeline होती है. Usually जो आपके पास question आता है, कई बार उसमें 4 stages given होती है. So don't cram this. So it varies. So this is all about this session. Major and the important part is the performance of a pipeline processor. तो हमने speed up की बात की है. We have talked about the efficiency. We have talked about the throughput. तो इसके ही बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ द एफिशिएंसी, थ्रूपुट और the performance can be evaluated. On the basis of this, what sort of questions can be asked या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो हम मास्टर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे एंड इन द मास्टर क्लास सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे थे. Although from next session onwards we will be discussing the questions. If you want to learn all the concepts in detail, मैंने basics discuss किया है pipeline का. We have not solved much questions, जो कुछ questions हम master class में करेंगे. But if you want to cover the whole syllabus and you are targeting on UGC NET December 2024, then for you guys we have launched Foundation Batch 2.0. In this batch, along with the live sessions जो latest pattern और latest syllabus के according होंगे, उसके अलावा आपको books मिलेंगी जिसमें theory और MCQs दोनों included होंगे. Practice is very very important. जो अभी re-examination हुआ था उसमें भी students were like paper was very easy, paper was predicted but थोड़ा सा lengthy था. वो lengthy उन लोगों को लगा है जिन्होंने enough practice नहीं की थी. So practice is required. Questions कहाँ से लेने? You will be provided with a set of questions. So in this batch, for both the papers, that is paper 1 and 2, will be having the complete live sessions and the guidance session. And based on the latest exam pattern and the syllabus, practice questions and structured study notes will be included, and fully solved previous year papers and mock test series will also be covered. अभी वाले पेपर में भी देखा, last previous year papers भी अगर उठा के हम analyze करते हैं, there are the gate questions which are asked directly in the UGC NET paper.
प्रीवियस ईयर गेट के डायरेक्टली क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी आए, तो ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करेंगे एंड विल आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स. So these are the benefits of joining the foundation batch. Apart from that, there is a special mentorship for the PhD admissions in top universities. And if you have any concerns or you have any queries, obviously subscription लेने से पहले हो सकता है. So you can make a call on the number, although it's written on the slide, but I guess ऑल्दो आपके पास स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम राइट बॉटम में आपको नंबर दिख रहा है, ऑल्दो आई एम राइटिंग इट हियर एज वेल, यू कैन मेक अ कॉल on this number if you want to get to know more related to admissions. Currently, selection ki matki sale is going on. Under the sale, you will be getting 55% off along with 35% off. This is the additional off plus free pass pro आपको मिलेगा. Actual price of the course is 26,999, but after the discount, you will be getting it for 8,286, and the subscription will be valid till your exam, that is December 24. In order to get the deal at this price, you need a coupon code. So that is Shefali S. It's SHEFALI S. Okay, so take the benefit, and promo code is written over here as well. Screen में middle में आपको दिख रहा होगा center में. So it's there. So this is all about this session, and apart from that, we are having the sessions on weekdays and weekends except for Thursday and Friday. Free sessions जो है master class, जिन लोगों को लग रहा है Testbook platform पे तो it will be paid, no it is not paid. So if I talk about the free sessions, तो दो sessions daily free वाले आते हैं, एक YouTube and other one is the master class. For YouTube session, timing is 6:30 p.m. and for master class same day, क्योंकि उस टाइम पे टॉपिक आपने पढ़ा होता है तो रिलेट करना थोड़ा इजी होता है. सो सेम डे वी हैव द मास्टर क्लास एट 8:30 p.m. Again, I'm repeating this point. These sessions are free, and every day we have these sessions except for Thursday and Friday. Thursday and Friday is off. And apart from this, every day we are having 2 sessions in the super coaching batch. The duration of each session is 2 hours because we are targeting on completing the syllabus by end of November, so that आपको revision और practice के लिए time मिल जाए. Okay, so this is all about today's session. In the next session, from next session onwards, we will be learning the concepts through questions. जो detailed concepts है that I will be covering in the super coaching. ओके एंड इसके अलावा अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स या कंसर्न्स बच जाते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो. और अपार्ट फ्रॉम दैट, गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं. यू कैन एक्सप्लोर दोस लिंक्स एंड if you have any queries, then definitely the number is displayed on the screen. आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो and you can ask your doubts. Okay, so if you guys like this session, don't forget to like the video, share it with your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Bell icon ko hit karte ho, benefit will be you will get the notification of all the upcoming sessions. If you guys have any doubts or queries, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. But definitely, I'll see you at 8:30 p.m. in the masterclass, जिसमें हम pipelining के basis पे कुछ previous year questions discuss करेंगे. कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लाइव. आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.